Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl। हम आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीरीज 4 की। आपको मालूम है सीरीज 4 इज अ ब्रांड न्यू प्रेजेंटेशन सीरीज जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज है दोस्तों हमारी एपिसोड नंबर 3 एंड आज हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ स्पेसिफिकली दोस्तों आज दो चीजें हमें सीखनी है। एक है व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज अ स्टैंडर्ड way of writing it, a standard form of writing a linear equation in two variables. These are two things that we want to discuss today. Now दोस्तों, अब तक हमारी जो प्रेजेंटेशन जो वेबिसोड 1 एंड वेबिसोड 2 है, आपने देखा है हाउ वी टॉक्ड अबाउट कैसे करके हम we write linear equation in one variable. So मान लीजिए you have something like x plus 4 is equal to 10, right? So इसे how do we why do we call it linear equation in one variable? So हमारी वेबिसोड 1 and वेबिसोड 2 में दोस्तों we talked about linear equation in one variable किसे कहते हैं, how we actually form these equations from the questions जो हमें दिए जाते हैं, and how we solve linear equations in one variable. Right? These are things we have already discussed. So very quickly दोस्तों आप नोटिस करोगे इसे we call it linear equation in one variable. पहली बात तो ये है कि there is only one variable. ये जो आपकी x plus 4 equal to 10 जो equation है हमारी, इस equation में we have only one variable which is x. And the second thing is ये जो variable है it is raised to a power of 1. Now आपने ये भी देखा है दोस्तों from our series 2 polynomials की जो सीरीज थी जहाँ पे all these webisodes we talked about कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, लिनियर क्यूबिक लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। वी हैव लर्न दैट अगर हमारी डिग्री 1 होती है वी कॉल देम लिनियर पॉलिनोमियल्स। सो ये है हमारी लिनियर इक्वेशन बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, यू हैव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स x plus 4 एंड यू हैव 10। जब आप दोनों को इक्वेट करते हो यू गेट ए इक्वेशन एंड दिस इज अ वन वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. So because of this reasons we call it linear equation, right? It is a linear equation and it is a linear equation in one variable. हमारी variable in this particular case it is x, right? Now मान लीजिए दोस्तों, now if we write something like x plus y is equal to 10 या फिर we write 2x minus 3 is equal to 5 या फिर फाइनली चलिए लेट अस राइट समथिंग लाइक 5x by 2 plus square root 2y is equal to 13. ना दोस्तों आप रियलाइज करोगे कि ये जो हमने तीन चीजें लिखी है, राइट, लेट अस जस्ट नंबर देम। ये है हमारी फर्स्ट वन, दिस इज आवर सेकंड वन एंड दिस इज आवर थर्ड वन। ये जो हमने तीन चीजें लिखी हैं दोस्तों, these are all equations because you have algebraic expression on both sides, right? And again दोस्तों we have talked about in detail about what are algebraic expressions, what are polynomials, उनकी degrees and so on and so forth in our series 2 presentations. So we hope that you have already gone through them. So all of these, in each of these 1, 2 and 3 examples दोस्तों, we have an equation, right? You have expression on both sides which are equated. So you have equation. Now यहाँ पे आप अगर देखिएगा you will notice that there are two variables, variable x and variable y, and the maximum power to which any of the variables is raised is again 1. अगर हमारे यहाँ पे पावर लिखी नहीं है we know it is 1. So this is again an example of now linear equation, right? चलिए इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, इक्वेशन in two variables. So why two variables? Because यहाँ पे दो unknown है. We have both x is unknown and y is unknown, but it is a linear variable, right? So मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पास if you have something like x square minus 9 is equal to 0. Now this would have been an example of a quadratic equation because you have value, the degree of this equation is 2. इसे हम कहते हैं quadratic equation and with one variable, right? So this would have been an example of
quadratic equation, this one. But आज हम we are not talking about quadratic equation. We are so this is incorrect. We are talking about only linear equations. But this is an example of linear equation in one variable. आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारी जो 1, 2 and 3 है, we have two variables x and y. So and the maximum degree is 1 again, right? So this is the example of linear equation in two variables. Similarly अगर आप इसे देखते हो, so यहाँ पे भी again you have दो वेरिएबल, you have y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, and again the maximum power is 1. So this is again an example of linear equation in two variables, right? In two variables. And similarly दोस्तों जो last one है, यहाँ पे again you will notice that you have a variable x and a variable y, and this is again an example of linear equation in two variables. So आप सोचोगे दोस्तों why do we need linear equations in two variables, right? So actually we will take some examples and then we will try and find out कि हमारी जो रोज की जिंदगी है उसमें we sometimes, and you will notice more often than not, we actually need to write information in this fashion. So chale, let us take some of these examples. Now, so first example is I go to market and I buy some books and notebooks. I buy a total of 10 things. So how do you present this information as equation? So आप देखोगे दोस्तों हम दुकान में जाके I buy some books and some notebooks, right? कितनी किताबें हैं, कितनी notebooks है, कितनी books है, कितनी notebooks है, we don't know. But we know the total I buy 10 things. So दोस्तों इस information को अगर आपको present करनी है as equations, आप कैसे करके करोगे? So what you will do is you will say, चलिए let the number of books, because हमें मालूम नहीं है, so let the number of books that I buy, right, इसे कहते हैं x, right? And then so because we don't know, हमें मालूम नहीं है दोस्तों, right, कि कितनी किताबें, कितनी books है, so let the number of books is equal to x, and let the number of notebooks is equal to y, because again this is another information that we don't know, right? But what we do know is the number of books plus number of notebooks. अगर हम उन्हें combine करते हैं we get 10. So ये हो गई दोस्तों हमारी way of writing जो information हमें दी गई है as an equation. And हम notice करते हैं यहाँ पे जब हम इस information को ऐसे करके equation form में लिखते हैं, guess what do we get? We get a classic example of linear equation in two variables, right? Because you have two variables x and y जो हमारी दो unknown हैं यहाँ पे, and it's a linear equation because maximum power is 1. So this is an example of linear equation in one variable. चलिए दोस्तों we will take one example. Now मान लीजिए perimeter of a rectangular field is 40 meters. Represent this information as in the form of an equation. Now आपको मालूम है दोस्तों perimeter का मतलब है, अगर आप ऐसे करके रफ में अगर आप एक पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हो, राइट, आपको मालूम है अगर रेक्टेंगल की ये जो ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल, सो ये लेंथ है, ये लेंथ है, एंड ये विड्थ है, एंड ये विड्थ है, राइट ना। आपको मालूम है दोस्तों जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल, उसे हम लिखते हैं इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द लेंथ, राइट? सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. सो पेरीमीटर का मतलब है L प्लस W प्लस L प्लस W, या फिर विच इज एक्चुअली कॉल्ड 2L प्लस 2W. नाउ हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर दी गई है एज 40 मीटर्स. ना दोस्तों हमें मालूम नहीं है लेंथ क्या है, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी से ऑल राइट, सो वी विल अस्यूम, अगर हमें मालूम नहीं है वी नो दैट वी हैव टू अस्यूम, राइट? सो वी अस्यूम let length of this rectangular field be x meters, y meters, because यहाँ पे perimeter is given in meters, right? And this is not sufficient. हमें अभी we have to also assume the width of the rectangular field, because उसके बारे में भी हमें कोई idea नहीं है, right? So we say now let's assume the width of the rectangular field is y meters. Then हमें मालूम है कि जो perimeter है then that is given by 2 times the length plus 2 times the width,
एंड दिस इज इक्वल टू 40 जो हमें दी गई है। सो दोस्तों ये जो हमने ऐसे करके इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ linear equation in two variables, variable x and variable y. Now एक चीज दोस्तों जो आप नोटिस करोगे कि it is not required आप always you take x and y as your variables, right? Now चलिए I mean this example में we have taken it this way, but अगर आपको कोई ऐसे करके दे something like मान लीजिए 3r minus 2s is equal to 10. Now दोस्तों this is again an example of a linear equation in two variables, and in this case the variables are r and s. So point ये है दोस्तों कि जो linear equation in two variables है वहां पे आपके पास दो variables होनी है उस equation में, and the maximum degree to which that equation should be raised is equal to 1. Now it is a convention दोस्तों that we always take, अगर अननोन हमें ढूंढनी होती है, अगर वन अननोन ढूंढनी होती है वी ऑलवेज अस्यूम इट इज x, और अगर हमें दो अननोन ढूंढनी होती है देन वी अस्यूम द सेकंड वन टू बी y. इसके लिए मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स या फिर जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं यू विल नोटिस दे आर मेंशन्ड इन x एंड y टर्म, बट वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज आपको इक्वेशन हैज टू बी इन वेरिएबल x एंड y, इट कैन बी एनी अदर वेरिएबल एज वेल. Now चलिए दोस्तों we will probably take one or two more examples. Now ये है हमारी थर्ड एग्जाम्पल. मान लीजिए I have a total of 1000 rupees. Now rupees हो, डॉलर्स हो, रियाल हो, जो भी हमारी करेंसी हो, हमारे पास 1000 is my total amount, and in denomination of 100 की नोट and 50 की नोट. Represent this information in the form of equation. So basically what we have or what I have, आप देख सकते हो दोस्तों I'm not a very rich person, clearly this is the total money that I have. Now चलिए so basically हमारे पास टोटल है 1000, एंड ये जो 1000 है इट इज इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स एंड 50s, राइट? हमें मालूम नहीं कितने 100 की नोटें हैं और कितने 50 की नोटें हैं. सो व्हाट वी डू इज वी से हे ओके चलिए लेट द नंबर, चलिए इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ हंड्रेड्स या 100 रुपीज या $100 या जो भी आपकी करेंसी है, let those be x, right? And similarly let number of 50s जो 50 की नोटें हैं, let them be equal to y. So अगर हमारे पास 300 की नोटें हैं then it means I have 300. अगर हमारे पास दो 50 की नोटें हैं it means I have 50 times 200. So अगर आप देखोगे so हमारे पास then so अगर हमारे पास x 100 की नोटें हैं so how much money do I have? So it means I have 100x, right? And अगर हमारे पास 50 y की नोटें हैं it means I have 50y. So अगर हम इसे ऐड करते हैं 100x plus 50y जो टोटल है, this will give me total amount जो हमारे पास है which is given as 1000. So ये हो गई दोस्तों another example of equation in linear equation in two variables. यहाँ पे हमने again variables को we have chosen to be x and y, but like we just discussed this could be any other two variables. Now चलिए दोस्तों we will take our final example before we wrap up this presentation. So ये है मान लीजिए there are both boy students and girl students in my class. Yes, and there are a total of 40 students. So represent this information as a form of equation. So हमें मालूम नहीं है कितने boys हैं, right? And हमें मालूम नहीं है कितने girls हैं. So but we know that number of boys plus number of girls, ये हमारी total number of students है which is 40. So हम लेते हैं, let us assume that number of boys is equal to x and we assume number of girls is equal to y. So we will have x plus y is equal to 40. So ये बन गई दोस्तों how we are actually writing our last example, another example जहाँ पे we have a linear equation in two variables which are the two variables x and y. So दोस्तों आइए चलिए now what we will do is we will try and find out if we can write a standardized form of linear equation in two variables.
सो दोस्तों ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, राइट. वी डिफाइन इट इन दिस फैशन. एनी इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0. कोई भी इक्वेशन अगर उसे हम if we can write it in the form of ax plus by plus c equal to 0 such that a, b, c are all real numbers, a, b, c they are all real numbers and a, b are not equal to 0, a, b are not equal to 0, then we say that that particular जो आप expression है, जो equation है आपकी, that is a linear equation in two variables. So हमने देखा दोस्तों, we have been seeing lot of examples अब तक, right? So चलिए let us apply this जो हमने definition देखी है. If you notice that अब तक जो हम examples देख रहे थे, जैसे x plus y equal to 40, right? ये थी हमारी last example. Now clearly इसे you can write this as x plus y. आप 40 को you can bring it to this side and it will become minus 40 equal to 0, and this is nothing but this is x plus y plus minus 40 equal to 0, right? So यहाँ पे दोस्तों the coefficient of x is 1, coefficient of y is 1 and ये है आपकी c. So this basically is a, this basically is your b and this is your c. So ये बन गई आपकी ax plus bx, ax plus by plus c equal to 0. Now similarly दोस्तों अगर आप ये जो आपकी फॉर्म है ax plus by plus c equal to 0, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए दोस्तों, अगर आपकी a equal to 0 होती है then what happens? अगर if you have a equal to 0, if you have a equal to 0, then ये बन जाती है इक्वेशन 0 times x plus by plus c equal to 0, और it means कि 0 times anything is 0, so ये बन जाती है by plus c equal to 0. इसका मतलब है दोस्तों if a is equal to 0 then पूरी जो x की टर्म है that goes away, so you are left with by plus c, right? इसका मतलब अगर आपके पास इक्वेशन है by plus c equal to 0, this is a linear equation in only one variable. यहाँ पे x नहीं है. एंड सिमिलरली अगर आप b इक्वल टू 0 लेते हो दोस्तों, आप नोटिस करोगे ये जो y की टर्म है दैट गोज अवे. सो इसका मतलब ये है दोस्तों, दैट इज व्हाई द डेफिनेशन स्टेट्स दैट बोथ a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये जो a एंड b है दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ये 0 होती है, दोनों में से कोई भी 0 होने से द अदर टर्म, दैट टर्म विल गो अवे एंड इट विल बिकम लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल. In order for this to be a linear equation in two variables, both a and b should not be equal to 0. And एक और final चीज दोस्तों before we wrap up we wanted to highlight was that a, b, c are all real numbers, right? So इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हम आपको एक example देते हैं something like square root 2x plus 5 by 3y minus 20 is equal to 0. So सवाल ये है कि दोस्तों is this a linear equation in two variables? And answer is yes. Why? Because in this particular example ये जो आपकी टर्म है this is equal to a, right? And ये जो आपकी टर्म है this is equal to b, and ये जो आपकी टर्म है minus 20, this is your c. So यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कीजिए, so your a in this example, a is equal to square root 2, b is equal to 5 by 3 and c is equal to minus 20. Now all of this is true because linear equation in two variables का मतलब ये नहीं है कि जो coefficients है for the variable या फिर these terms that they all have to be integers like 1 2 3 4 या minus 2 minus 3 minus 4 etc. So in this case you have coefficient of x which is a as a irrational number. And in this case you have the coefficient of b as a rational number which is a fraction. And आपने दोस्तों देखा है हमारी जो series 1 थी numbers and more numbers, वहां पे we talked about all kinds of numbers, rational numbers, irrational numbers, real numbers etc. And वहां पे we have clearly seen that all rational numbers and all irrational numbers collectively form all real numbers. So इसका मतलब ये हुआ दोस्तों that
जब कभी आपको ऐसे करके कोई एक एक्सप्रेशन दी जाती है, इक्वेशन दी जाती है, and you find that a, b and c, as long as they are real numbers, then you have a linear equation in two variables. आज के इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।